Hello everyone, welcome back to your own channel Tacos in Europe. This one is a very important video for those who received the income tax notices and are worried. If you remember from last year, we were confused between 1,20,000 or 2,40,000 relief means when you have a child and you want to take child relief. Of course, for single it was 1,20,000, and for joint we assume that it may be 2,40,000 salary threshold when we get this benefit. So we were confused about it and we did submit. And I think now, since many of you have got the error or notices from the income tax to pay the revised income tax return, so this video covers that topic. So if you have received income tax notice, do not worry. Okay, don't panic. घबराना नहीं है आपको. सबसे पहले उस नोटिस को पढ़िए. Just read the notice and see what it is talking about. And if you find any objection, for example, if you have not submitted the internet bill, submit the internet bill. If it is asking for, if you think some claim that you have claimed and you are not eligible for that, you have full authority to resubmit the revised income tax return or PIT 37. And this video covers that topic. So do not worry. It's not a crime that you have done unintentionally, but something which you can resubmit and fix, and you can pay the difference amount if you get any dues after resubmitting application. So now let's start this topic. How to submit revised PIT 37 for previous or current year. And as I said, applicable when you receive notice or realize some mistakes in ITR like child relief or internet, as last child relief was very confusing. So do you remember, as we discussed some time back, we were confused about this topic. So now we have clarification from income tax department that uh, 56,000 zloty is for single taxpayer, and for joint it's 1,12,000. So if your income falls above that, you're not eligible for child relief. And this is now 100% confirmed information from the income tax portal as well as from the response that we have received from income tax department. One of our friend Ankit, he was definitely pointing out last year, and I appreciate what he was saying is right, and let's accept it. So now, to submit, or first read the notice and see what they are saying. Most probably they say that reply within 7 days or 14 days. So just read and accordingly act. It is just a few-minute process. So again, you log into Podatki.gov.pl, and then you can click on your EPIT. And when you go here, you get a window called Go to Submitted Documents and Submit a Tax Return. Alternatively, you can also simply click on submitted documents if you don't want to do this. So for example, you log into this portal and click on directly documents and then submitted documents from here. And when you log in here, and when you click on submitted document, you should see like 2023, 2022, 2021 in all the years and the amount. So you can choose, for example, uh, if you have received notice of 2022, then click on 2022, and then here you should see the previous year amount. When you do that, just click on the overpayment amount from here. Just expand this section, and when you expand this section, you get a window called submit a corrected PIT. And when you do that, just click on PIT 37 tax return correction. So from here, you can just go to the confirmation like this, and when you do that, you get a window like this where you can say submit tax return, submit corrected tax return, attach the reason of submission. Okay, like this you can select, and purpose of document submission. So I selected, or you select like something like submit corrected tax return correction. And here you can mention the reason of the submission. For example, if you have received a notice, there has to be a case number, so just update that case number in this section, and then click on confirm. And when you click on confirm, you should see a window something like this, where you can just verify your bank account details if there are any extra due or if you have to pay. And then here you can see child relief was showing last year this much. So you can just click on edit, and then you can remove this child relief, and after that see what comes further. So as I said, last year this option was not like this, but now you can clearly see below message your earned income greater than 46,000 PLN if you settle tax individually and do not have a spouse, or PLN 1,12,000 zlotys for income of spouses, or if you settle tax as a single parent. Therefore, so single parents means
either could be husband, father and child, or mother and child, and therefore you may not deduct this child relief. If you are entitled to a relief for more than one child, indicate all the children's, and you so sorry for that. I know it hurts that if you have to pay extra amount, but that's how it is. And when you want to remove this child relief, you can just click on this edit child relief option, and from there you can just uncheck this option, I want to add child relief. And when you do that, click on submit and accept and send. When you do that, once you have performed all the changes, and same way for internet, if you have claimed internet which you think is not eligible, then you can also really remove that internet claim. And if you have the bills and they are asking you for the bill, you can submit it as well. So now when you are satisfied with the information, for example, when you click on this and when you click on accept and send, you get a message like this: congratulations, you have submitted tax form for EPIT 37 for 2022, and here you can get the UPA form. So I hope this is a simple, slow video, or a very short video, and I hope this helps you in simply settling. Now, when you do that, you should see something like here, liability of paying, and then there is a message something like payment due warning or something like this. You should see, and then you can um, within 1 week you should receive another letter with new due amount when you submit this, and you need to clear within 7 days of receiving the letter. Alternatively, you can also verify the same in income tax portal under settlement section, like I have shown you below, and you will receive account details for payment in the letter received. So basically you will this is the mailbox. Here you will get the letter. When you open the letter, you have the bank account details where you need to make the payment like this. So this way you can do. So do not panic, but calmly read the notice and correct the PIT as described in the video. It's easy process and doable yourself. There might be an additional payment needed if you remove the reliefs in some cases, and it can be settled by visiting income tax office by post or online. So do not panic. That's the only point I want to highlight. So thank you for watching. Please like, share, and subscribe with friends who may receive any notice for submitting corrected PIT returns and if they are worried. From here, I'm going to continue this video in Hindi for the people who don't understand English. सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल थाकोस इन यूरोप। और ये वीडियो जो है वो रिवाइज्ड PIT 37 रिटर्न के बारे में। कई बार प्रीवियस ईयर का जब स्क्रूटनी होता है और उसमें पता चलता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको नोटिस आता है, इन दैट केस आपको कैसे रिप्लाई करना है, इसके बारे में वीडियो। तो लास्ट ईयर हम लोग कंफ्यूज थे कि जो हमारा चाइल्ड रिलीफ है वो 1,20,000 में है, ये 2,40,000 है, किस पे एप्लीकेबल है, क्या जॉइंट में 2,40,000 है कि नहीं है। एंड आई थिंक मेनी ऑफ अस ऑप्टेड अंडर द ओल्ड ऑप्शन. So as a result of which it was an error, and many of the people have got notices who are not eligible. So do not worry about the notice. Just read it carefully and remove this child relief. और उसके बाद आपका जो भी ड्यू अमाउंट आता है उसको आप पे कर दीजिए। ठीक है, यानी 1,112 का जो आपने बेनिफिट लिया था वो आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ता है। यही थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। तो इस साल का क्लैरिफिकेशन आया इनकम टैक्स की तरफ से भी, लेटर से भी और उनके पोर्टल में भी, कि 56,000 है सिंगल अर्नर के लिए, और अगर जॉइंट सबमिशन कर रहे हैं तो 1,12,000 का आपका रिलीफ है चाइल्ड का। और उसको आपको नोटिस को आंसर कर कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। पोडेटकी पे जाइए। पोडेटकी पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ मेल में, इस मेल वाले सेक्शन में वो लेटर आएगा। लेटर को खोलिए, पढ़िए और देखिए। अगर वो बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल आप चाइल्ड रिलीफ के लिए एलिजिबल हैं, तो वो आपको बोलेंगे डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट सबमिशन कर दीजिए। अगर आपको लगता है आप वो एलिजिबल नहीं है, तो आप रीसबमिट कर दीजिए करेक्टेड PIT फॉर 2022 या जो भी ईयर का उन्होंने बोला है। उसके लिए कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। सिंपल डॉक्यूमेंट पे जाइए या फिर ईपिट पे जाइए, दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। आपको ऐसे ऑप्शन आता है गो टू सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट अ करेक्टेड टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक कीजिए। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आता है 2023, 22, 21 ऐसे करके 22 आप सेलेक्ट कीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ओवरड्यू अमाउंट आता है, इस पे, इस एरो पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करते ही आपको ऐसे आता है सबमिट अ करेक्टेड PIT। इस पे क्लिक करने के बाद आपने PIT 37 का टैक्स रिटर्न करेक्शन करना है, और करेक्शन करने के बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन का ऐसे विंडो आता है, उसको सिलेक्ट कीजिए, सबमिट करेक्टेड टैक्स रिटर्न, और यहाँ पर टैक्स रिटर्न करेक्शन, और ये रीजन कमेंट में आप डाल दीजिए अपना केस नंबर जो भी आपको लेटर आया उसका। ठीक है, नो नीड टू वरी, नो नीड टू पैनिक। सिंपली उनको ऑब्जेक्शन है, आप उसे क्लियर कर रहे हैं, दैट्स ऑल। यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग। आप बस इन्फॉर्मेशन, आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप उसको करेक्ट करके सबमिट करें, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। सिंपल यहाँ पर केस नंबर डालिए और कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ चाइल्ड रिलीफ हटाने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक कीजिए, एडिट अदर रिलीफ, और इसमें जाके आपने फिर ये आई वांट टू ऐड चाइल्ड रिलीफ के ऑप्शन को अनटिक कर देना है, बस अनचेक कर देना है, एंड दैट्स ऑल। वंस यू डू दैट, आपका ऐसे ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट एंड सेंड का।
और एक्सेप्टेंस तो इसको अनचेक किया और सबमिट किया है, सेव किया, उसके बाद आपको आ गया ऐसा एक्सेप्टेंस सेंड करते ही कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सबमिटेड, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्शन क्लियर। जब ये आप भेज देते हैं तो उसके बाद आपको एक लेटर आएगा वहां से, सेटलमेंट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ लाइबिलिटी दिखाएगा आपका कुछ, कौन से पीरियड का है, इतना अमाउंट है, कब पे करना है। ठीक है, यहाँ पर जाके आप पे कर सकते हैं। और पे अगर यहाँ नहीं भी आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पर एक और मेल आएगा लेटर, उसमें अकाउंट नंबर वगैरह दिया होगा। आप चाहें तो इनकम टैक्स ऑफिस विजिट करके भी सेटल कर सकते हैं, या फिर आप जो अकाउंट डिटेल दिया उस पर करके आप इनको मेल कर सकते हैं। उस लेटर में ईमेल आईडी वगैरह सब चीज दी होंगी। एंड दैट्स ऑल, इतना करके आपको विद इन 7 डेज उनको पेमेंट करके रिप्लाई कर दीजिए, एंड दैट्स ऑल, आपका जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा और ये ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। सो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू वरी, एकदम काम रहिए, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया है। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन था, तो आपने उसको क्लियर किया है, एंड दैट्स ऑल। तो चाइल्ड रिलीफ नहीं मिलेगा उसका दुख तो होगा, और थोड़ा अमाउंट जो शायद देना पड़ रहा है वापस, डेफिनेटली पैसे जाते हुए अच्छे नहीं लगते। लेकिन इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या किसी कंसल्टेंट या एजेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं बाय पोस्ट, बाय विजिटिंग इनकम टैक्स ऑफिस और ऑनलाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद फ्रेंड्स हु मे रिसीव एनी नोटिस फॉर सबमिटिंग करेक्टेड पेड रिटर्न्स। क्या पता उनको हेल्प करें और बिना किसी एजेंट या यू नो अकाउंटेंट्स वगैरह के पास जाके बिना जाए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है हाउ टू अप्लाई न्यू बॉर्न बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैंने बनाया था लेकिन पासपोर्ट का अभी नहीं बनाया था, और इसके साथ साथ मैं एक और टॉपिक कवर कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें है कि अगर नाम चेंज करना है बच्चे का या फिर री अप्लाई करना है पासपोर्ट को तो वो कैसे करना है, वो वीडियो इसी वीक में हमारी रिलीज हो जाएगी। और मेडिकल पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी वैक्सीनेशन के साथ मर्ज करके लाने वाला हूँ। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए उनको जिनको नोटिस आया है, क्या पता उनको बहुत ईजी सोल्यूशन मिल जाए और वो बहुत ही अच्छे से इस चीज को हैंडल कर पाए बिना किसी टेंशन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू हैव अ गुड डे।